अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफ़ूनल कलिम मिन बअदि मवादिह यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतऊहु फ़ाहज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैआ उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतह्हिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सम्माऊन लिलकज़िबि अक्कालून लिस्सुह्त फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम वइन तुअरिद अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शैआ वइन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौन मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइक बिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हें गमगीन न करें वो जो कुफ्र पर दौड़ते हैं। जो कुछ वो अपने मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए और उनके दिल मुसलमान नहीं, और कुछ यहूदी झूठ खूब सुनते हैं और लोगों की खूब सुनते हैं जो तुम्हारे पास हाजिर ना हुए। अल्लाह की बातों को उनके ठिकानों के बाद बदल देते हैं। कहते हैं ये हुक्म तुम्हें मिले तो मानो और ये ना मिले तो बचो, और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिज़ तू अल्लाह से उसका कुछ बना ना सकेगा। वो हैं कि अल्लाह ने उनका दिल पाक करना ना चाहा, उन्हें दुनिया में रुसवाई है
اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ بائیں ہمہ اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 43 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔